Education of Farming Society, Kota, and Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University. I cordially welcome you all to the second day of this 7 days international training come workshop on agricultural research, entrepreneurship, and skill development for a nation's growth. This program is jointly being organized by Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, and Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University. Vital Biotech is India's leading publication research and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems which related to food and agriculture. To achieve these goals, it is actively involved in the creation and manufacture of microbiological and biotechnological substances and molecules gaining respect both domestically and globally in the field of scientific publication. Vital Biotech aims to publish top-notch, progressive, peer-reviewed research articles, whereas Agricultural Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, serves as a spiral between the network of rural communities in India and other stakeholders, such as the government, development organizations, and corporate entities. It is a spherical organization of agricultural professionals and related sectors in India. It provides a common platform for various agricultural professionals like professors, associate professors, assistant professors, PhD scholars, students, mystics, experts, and researchers working in various scientific institutions across India and abroad. Under the auspices of AFTFS Kota, Vital Biotech Education Group is aiming to increase the capacity of the agricultural and related industries by filling up skill shortages and upskilling the current and future workforce. We collaborate closely with all parties involved in agriculture to enhance the standard of living for researchers, professionals in the workforce, farmers, and farm and extension employees. Sri Guru Gobind Singh Tricentenary University, Gurugram, Haryana, India is a premier institution under Dashmesh Educational Charitable Trust founded in 1999. SGTU is one of the best private universities in Delhi NCR, India, with a rich legacy of excellence in research, innovations, and skill development. The Faculty of Agricultural Sciences in SGT University, established in 2016 and 17, is offering, besides others, courses of BSc Honours Agriculture, MSc Agriculture and Agronomy, Horticulture, Agronomy and Soil Sciences in the Department of Agriculture. The faculty emphasizes innovative learning, critical thinking, and a more holistic approach to experiential, discussion-based, and analysis-based learning. I would also like to announce our knowledge partners for this program: Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur; Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Haryana; Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow; Central Agricultural University, Imphal; University of Agricultural Sciences, Raichur, Karnataka; University of Sri Jayawardhanapura, Sri Lanka; and Agrosphere e-newsletter. Also, I congratulate the entire organizing team for organizing this insightful training program. Today, we are highly privileged to have such honorable dignitaries among us. It is a matter of great pride for us today that we have Professor Dr. Inder Singh Naruka, sir. Naruka sir has obtained his PhD in horticulture from Rajasthan Agricultural University, Bikaner, Rajasthan. He later served as a scientist horticulture at the College of Horticulture, Mansoor, JNKVV, Jabalpur. In 2014, Sir was appointed as the Deputy Director of Research and later as Associate Director Research, Season Farm, at the Director of Research Services RV SKVV Gwalior. Currently, he is serving at Agricultural University Jodhpur, Rajasthan on the post of Zonal Director Research. ARS Keshwana, and he is an ARS Keshwana holder and also holding additional charge of Senior Scientist and Head KVK Keshwana. Dr. Naruka has more than 22 years of experience in teaching, research and management and extension activities. He has more than 95 research publications in reputed journals, author of 3 books, several book chapters to his credit, and serves as a member of several professional bodies and societies. Dr. Naruka was also elected as the Fellow of the Indian Society of Seed Spices, Ajmer. So, sir, with this, your achievements are great and endless, and we can't wait to hear from you. So I hand over the stage to you, sir.
Okay. Yes. Now camera is on. Okay. Uh, thank you, ma'am. And first of all, I am very much thankful to the Vital Biotech and all the organizers and the different audience from the across the country. And today, this opportunity is given by the Vital Biotech for delivering this lecture on high value crop grape. Uh, as you know, next slide, please. Yes, as you know that grape is a very important commercial crop. Just important commercial ground crop throughout the country. The major area under grape cultivation is concentrated in central and peninsular Indian states like Maharashtra, Karnataka, Andhra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh is limited extent, and in Punjab also in North India. At present, grape is cultivated around 140,000 hectare in India with an annual production of 3,125,000 metric ton. Uh, this is data of the current estimate of the National Horticulture Board in 2019-20. Uh, next, please. Globally, globally, grape cultivation is concentrated in temperate region, while our grape cultivation is confined to tropical and peninsular belt. अब देखेंगे ग्रेप जो क्रॉप है वो कंट्री के अंदर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया बट ग्रेप इज कल्टिवेटेड इन टेम्परेट रीजन प्राइमरीली दिस क्रॉप इज बिलोंग्स फ्रॉम टेम्परेट ये बोलिए ये शीतोष्ण एरिया का पौधा है बट अपने कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन में भारत की में ये साउथ इंडिया में अच्छा फ्लोरिश करता है now started diversification to other part with some promising cultivars also. All these things due to the diversification in cultivar, biodiversity in cultivar. Some cultivars grown in temperate very well, some of the cultivars in tropical and some of in the temperate and subtropical also. But this crops comes under the, according to horticulture classification, this crop is subtropical crop. Our prime objective would be harnessing is to viticulture and ecology science to ensure comprehensive and sustained grape production through different aspects. Next, please. Different types of grape varieties. As you know, that only we are very well acquainted about most of the people acquainted about table purpose grape. Only not only this table purpose grape. Grape is classified in 4-5 type of according to the varieties. 4-5 type of grapes. That is, say some varieties table varieties. Table varieties is having seedless grape. That is like the important variety is Thompson seedless, Tuyaklon, Superior seedless, Manjiri Naveen, Marvin seedless, H5, Sonaka, New Perlet, Sultanian, Kosa seedless, Urvashi and Kismis Roja Vishwai. Many more varieties are there, which is released from IIHR and USA. But out of these are the important varieties. The next group is color seedless. In this group, Sharad seedless, Krishna seedless, Lamb seedless, A18-3. This is also very good variety. And in the coming slides, we all all these varieties in the elaborative manner in the coming slides. Black seedless, Kishmis red, crimson seedless. Then the next group is seeded table. Next, please. Seeded table varieties having the importance. It is tasty and used for table, but having seed. That old varieties like Matsatu of Alexandria, Anabishai, Red Globe, Italia, Dilkus. These are the varieties having very good size berries, but having some seeds. That is the barrier for people's acceptability of this variety. But this variety is having also good importance. And that the next group is red wine varieties.
Red wine varieties are those varieties which is used for making the red wine. This No. is called Convent Large Black, Granite, Tempranillo, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Saint-Louis. These are the varieties which is commonly used for preparing red wine. And next variety, group of varieties, white wine varieties. In this group, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Clarity, Gariginoga, Viognier, and Sares. And next group is juice varieties. Juice varieties nowadays very having good importance, and in which among these juice varieties, Bangalore Blue Country, Bangalore, Arka Pusa, Norang, and Medica. This variety is popular. Next, please. Next, please. Yes, these are the varieties which having their silent characters. Like Swanson seedless, everyone know this variety. This is much popular variety, and having the bunch size is medium to large, and a very good yielder, around 20 ton per hectare, and it is late ripening. It takes about 120 to 150 days after pruning. Next variety is Pusha Urvashi. This is very early variety developed by IRI, and it takes about 95 to 110 days for ripening. Next, these are the bunches in the field condition. The next variety is Sultanian 2. It is this variety is also late maturing group, and takes around 140 to 150 days, and TSS is 20-degree Brix, and acidity is good, around 0.54%. Then this variety new perlet, this is the this variety is also good, and gaining more popularity among the farmers, and resin percent is 21.48%, and comes under the late maturity group. Next, next is Pusa seedless. This was developed by IRI, and this is also good variety. Then Manjiri Navni, this variety is very crispy and ripens in somewhat earlier as compared to other varieties. It takes about 125 to 130 days after pruning, and also a good yield, around 20 to 25 ton can be obtained from a hectare. Next, please. Next, please. Please. Yes. These are the important varieties among the colored seedless group. Kismis Roja Vishrat, Sharad seedless. Next. This is flam seedless, a very attractive color, having muscat flavor, and shining of the berries, the maroon color. It is very good variety, and in taste it is very crispy with muscat flavor. And next, that is fantasy seedless, uh, having the purple color, and bunch is compact with good flavor, and mid-late ripening variety, and takes about 135 to 140 days in ripening. Next, next, next variety is Crimson seedless. This is A18 this variety is having good color and a roundish berry, and the berry diameter is large, around 70.70 mm, and the bunch weight is 113.08 gram, with the TSS of 18.25 degree peaks. It is also comes under the late ripening variety, takes about 155 days. Next variety is Ruby seedless, is having 23% resin, and it is also late ripening group, that is 140 to 152 days taken in the field condition. Naruka sir, may I interrupt? Sir, the participants are requesting a dual bilingual mode. Some Yeah, English and some Hindi, yeah. if possible, sir. Okay, okay, Yes. okay.
ये वैरायटी भी लेट मैच्योरिंग ग्रुप की है, 140 से 152 दिन तक ये लेती है। और ये जो किशमिश जिसमें बनता है वो लगभग 23%, इसमें एक एक क्विंटल ग्रेप के अंदर 23 किलो के लगभग इसमें दाख बन जाता है, द्राक्ष बनता है। नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। यस, दिस इज द ग्रुप ऑफ सीडेड टेबल वैरायटी। ये इन वैरायटीज के अंदर बीज मिलेंगे, लेकिन खाने के अंदर बहुत अच्छी टेस्टी होती है। और बाकी इनमें सीड होता है, जैसा मैं पहले बता रहा था। इसके अंदर से रेड ग्लोब है, ये भी अच्छी वैरायटी है। ये थोड़ी सी अर्ली वैरायटी है, जो 138 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। और ईल्डिंग की काफी अच्छी है, उपज बहुत अच्छी होती है, 20 से 25 टन पर हेक्टर तक हो जाती है। देन नेक्स्ट इज क्रिसमस रोज। क्रिसमस रोज is also a good variety, uh, but as compared to red globe is much covered by the users. Next, अनाबेशाही। अनाबेशाही अनाबेशाही भी बड़ी अच्छी वैरायटी है, बहुत पॉपुलर वैरायटी है। पुराने टाइम से आप लोग नाम सुनते आ रहे होंगे। बट इस प्रोड्यूसिंग ए लार्ज वेल शेप्ड बंचेस। बंच इसका बहुत मोटा भारी होता है। आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो बंच साइड में जो लगे इनमें कुछ स्क्रेचेस हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा वो स्केच क्यों है। एक वैरायटी बहुत अच्छी है इसके अंदर सीडेड टेबल ग्रुप में, रिजामा। देख रहे हैं आप, खजूर की तरह की जो इसमें बेरीज लगी हुई हैं। अपीयरेंस बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है इसका। टीएसएस जो टेबल वेराइटीज से सीडेड का थोड़ा सा कम होता है। इसके अंदर थोड़ा टीएसएस मीठापन तो कम है, 16.67% की जिक्स है, बट ये टेस्ट क्रिस्पी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। यस, एक और वैरायटी इसमें मस्त है, तो अलेक्जेंड्रिया। ये इस वैरायटी के अंदर भी आप देखेंगे बहुत बोल्ड साइज बेरीज है। बेरीज के साइज 19.60 mm है। और इसका टीएसएस थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, अराउंड 19 डिग्री ब्रिक्स ये है। और राइपनिंग इनकी मोर और लेस 145 डेज में ही राइपनिंग हो रही है। नेक्स्ट, यस, ये वाइन वाइन वैराइटीज है, रेड वाइन प्रिपरेशन के लिए आजकल बहुत ज्यादा इस वैरायटी ने पॉपुलरिटी गेन की है। महाराष्ट्र में काफी जगह है, ये मध्य प्रदेश में भी कई एरिया में, रतलाम में भी शिराज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। और इस वैरायटी के बंचेस आप देख रहे हैं बहुत ब्लैकिश कलर में है। फील्ड के अंदर जो हमने जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो था, तो आप देखेंगे कि इस तरह की वाइन्स देख रहे हैं आप, बहुत काफी हाई यील्डर है, 25 से 27 टन तक प्रति हेक्टर इसमें निकल जाता है। और जूस जो है इसमें 60% तक होता है। और बेरी की साइज, वाइन वेराइटीज के अंदर बेरी साइज कोई मायना नहीं रखती है। बेरी साइज का वहां पर जरूरत नहीं है, वहां यील्ड से मतलब है, एसिडिटी से मतलब है, वाइन की क्वालिटी प्रिपेयर करने से मतलब है। तो अपन वहां पर एसिडिटी होनी चाहिए, ज्यादा एसिडिटी हो, एसिड वैराइटीज हो, और ईल्ड वाइज अच्छी हो। उनमें से शिराज बहुत अच्छा है। शिराज की आपकी वाइन आपको मार्केट के अंदर कहीं वाइन स्टोर्स के पे मिलेगी। नेक्स्ट, सिमलेस की चेरनी एक्सोटिक जन क्लास में है। और इसकी आप देख रहे हैं, इसकी भी रेड वाइन प्रिपेयर होती है इसी से, इससे भी। इसका एसिडिटी परसेंटेज देखेंगे तो आप 0.60%। और ये भी हाई यील्डर है। इसकी भी बेरी साइज 13.80। बेरी साइज इज नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस हियर, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रोसेसिंग में जाना है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें अपन ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज कम करते हैं, दैट्स व्हाई बेरी साइज इज नॉट गेनिंग टू इम्पोर्टेंस हियर। नेक्स्ट वन, next slide, next please. Yes, one is granny and a convent large black. This is also good eater, having more acidity around 65.58%. Next, here you see the bunches. Then white wine. This is the group by which we have to prepare white wine. And all white wine varieties have green color. This is all the colorless variety. But in red wine preparation, colored varieties is required. So in white wine varieties, clarity is exotic plasm, and
having good acidity around 0.69% and also a good yield variety. This is the field performance. Whatever seeing in the slide is from my field. This is the prolific bearer clarity, and this is the bunches. Whatever you see on the top of the slide, clarity. Next one. Next, please. Edition in black. This is also good variety. In European conditions, Chenin Blanc is performing very well. In our conditions also, this is the condition in Mandsaur region where we grow these varieties, and around 20 to 22 ton per hectare we have harvest the yield from these wines. Chenin Blanc. Next one, Garganega. This variety is also important for white wine preparation, and yield is somewhat less from other varieties, but it is 18 to 20 ton per hectare. Next. Yes, juice variety, Kusanauda. This variety is developed by IRI and a very popular variety, and matures early, between 95 to 110 days varieties, and mm, they have good antioxidants containing red pigment, both in peel and pulp. When the bunch is loose, medium sized, round and medium sized berries, it is very much suitable for making juice and also for red wine. Next one, Bangalore. This is also a very larger area in Karnataka, in Bangalore view. This variety is very much popular in Bangalore region. It is dual season variety. It also comes in the rainy season in under Karnataka conditions. Next, next, Medica. This variety is developed by NRCG Pune, and our center, Manjari Medica, is the name of this varieties, and it is recommended for cultivation in the state of Maharashtra and Madhya Pradesh. It is a juice purpose variety. There is purplish in appearance and has sour and aromatic berries, juicy, and a early maturing variety. It will take around 95 to 100 days in 10 days from fruit pruning to ripening. प्रूनिंग से लेकर के फसल पकने तक इसमें 95 से 110 दिन का समय लगता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज. यस, दिस इज ऑल अबाउट द वैरायटीज. अपन देखते हैं अंगूर के अंदर रूट स्टॉक का बहुत इम्पोर्टेंस है. रूट स्टॉक जो है ये आप सब लोग जानते होंगे. जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहता हूँ. रूट स्टॉक और साइन. रूट स्टॉक ऐसा पार्ट है जो बिलो ग्राउंड जो रूट सिस्टम रहता है उसको गवर्न करता है, और उसके ऊपर दूसरी जब ग्राफ्टिंग करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ शाइन पोर्शन. तो अंगूर के अंदर रूट स्टॉक के ऊपर लगा करके और फिर उसके ऊपर जब ग्राफ्टिंग की जाती है साइन, और फिर साइन से जो के बाद जो जिस वैरायटी की है और जिस पर्पस के लिए जो वैरायटी अपन ने लगाई है, चाहे वो जूस के लिए लगाइए, चाहे टेबल के लिए लगाइए, चाहे कलर ग्रुप के लिए लगाइए, तो यहाँ रूट स्टॉक की इंपॉर्टेंस अपने क्यों देते हैं, क्यों रूट स्टॉक की आवश्यकता है, डायरेक्ट कटिंग से क्यों नहीं लगा सकते. बट डिफरेंट कंडीशंस होती है सॉइल की. कहीं सॉल्टी है, कहीं पर वाटर प्रॉब्लम है, कहीं पर आपको इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, कहीं स्ट्रेस है, कई तरह का वो है. तो हर रूट स्टॉक का अपना अपना एक करेक्टर है और उसके लिए रूट स्टॉक यूज किया जाता है. जैसे सैलिनिटी जहाँ पर ज़्यादा है, मॉइस्चर स्ट्रेस होगी, उसके लिए कुछ रूट स्टॉक्स हैं, है ना. तो इन सबका या बायोटिक स्ट्रेसेस, इन सब में रूट स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो मैं यहाँ पर कुछ रूट स्टॉक्स को बताने जा रहा हूँ जिनके ऊपर हमने हम लोगों ने जो काम किया था रिसर्च में. जैसे 103 है, 110R इज वेरी गुड रूट स्टॉक. जहाँ पर सूखे की संभावना है, जहाँ वाटर शॉर्टेज है, कम है, तो वहाँ 110R लगाया जाए. SO4 भी बढ़िया है, डॉगरी जी भी है. कहीं पर जहाँ पर सॉइल के अंदर EC ज़्यादा है,
2 मिलीमॉस से ऊपर है ना, तो वाटर का एसी मोर देन 1 मिलीमॉस है, तो वहां पर अपन ज्यादातर एक आपने सुना होगा नाम से बोल से 110 आर, ये बड़े अच्छे रूट स्ट्रोक्स हैं इस ऐसी जगह के लिए जहाँ पर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 8 से ज्यादा है सॉइल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वहां पर 1103 पी 140 आर न्यूट्रॉन से ये रूट स्ट्रोक यूज कर सकते हैं। जहाँ कैल्शियम ज्यादा फ्री कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा हो 12% से, वहाँ के लिए SO4 बढ़िया है। इसी तरह से देन फ्लोराइड कंटेंट इन सॉइल्स में वहाँ के पहले की रूट स्टॉक ठीक है, 110 आर भी ठीक है। देन दिस आर ऑल आर द रूट स्टॉक। नेक्स्ट प्लीज। यस, एस्टेब्लिशमेंट अपन को किस तरह से इसको वाइन को वाइनयार्ड को एस्टेब्लिश करना है उसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हमेशा आपको परचेज करनी है प्योर और ट्रू टू टाइप रूटेड कटिंग्स ऑफ रूट स्टॉक। रूट स्टॉक आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए कि डॉगरी जी है 110 आर है, जहाँ से भी अगर फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं तो NRC जी पुणे से यहाँ से आप इसका मटेरियल ला सकते हैं। मंदसौर में भी सेंटर है, वहाँ से भी आप इसको पता कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम जो है प्लांटिंग का वो आपका 2 सीजन है, एक तो फेब मार्च में आप कर सकते हैं, रूट स्टॉक फेब मार्च में आप लगाएं, और ये दूसरा आपका रेनी सीजन। उसके बाद स्पेसिंग जो है इसकी बिटवीन 2 रोज आपको 9 to 10 फीट आप ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। इसमें आपको डिजाइड प्लांट 5x6 में भी आप टेबल पर ग्राफ ले सकते हैं। इसमें पिट्स वगैरह इस तरह से आपको बनाना है, एवरी वन नो हाउ टू डिग पिट्स एंड best this is the in situ grafting method and ex situ. These are the two types of what just they will plant the root stock in the field and then go for grafting. This is the in situ grafting. Next, please. This is the picture whatever shown in the slides. Then care should be taken to remove suckers from the graft. After grafting, the root stock also in giving leaf and bud and the below the grafted portion. So regularly remove that portion. नीचे से उस पोर्शन को हटाते रहें आप जो देसी निकलता है, और ऊपर ग्राफ्ट को आप केयर रखें। उस ग्राफ्ट को आप शुरू के अंदर बैम्बू वगैरह से उसको जैसा आप दिखा रहे हैं इस पिक्चर में देख रहे होंगे, बम्बू के ऊपर उसको थोड़ा सा ट्रेल किया जाए। देन आफ्टर वाई टाइप जो ट्रेलिस सिस्टम है वो रिकमेंडेड है अभी, तो उस ट्रेलिस सिस्टम आप देख रहे हैं वो इस तरह का जो स्लाइड में पिक्चर में है उसकी तरह से उस ट्रेलिस सिस्टम को उससे ट्रेनिंग दी जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। यस, फर्स्ट जब उसमें जो हाइट अटेन करता है आपका वाई टाइप ट्रेलिस के ऊपर, उसके बाद उसमें आपको आर्म्स के लिए ट्रेनिंग करनी है। प्राइमरी आर्म्स उसमें डेवलप हो जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, और उसमें वाई टाइप ट्रेलिस तक पहुंचने के लिए आर्म्स जहां पर आए वहां पर आपने कट देना है। कट देने के बाद जहां से आपको दो तरफ चलेंगी आर्म्स के ऊपर वन चलने लगेगी, जो आप नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्रूनिंग को आप देखेंगे इसमें 2 तरह की प्रूनिंग होती है, बैक प्रूनिंग है, फॉरवर्ड प्रूनिंग। वो जो फॉरवर्ड प्रूनिंग को फ्रूट प्रूनिंग भी बोलते हैं। बैक प्रूनिंग, ये 2 प्रूनिंग महाराष्ट्र रीजन के अंदर 2 प्रूनिंग करी जाती है। 2 प्रूनिंग का मतलब यह है कि जो पहली जो प्रूनिंग होती है जो आफ्टर फ्रूट फ्रूट जब अपना फेब मार्च में हार्वेस्ट हो जाता है, तो अप्रैल के अंदर इसको कैन्स को पूरा कैन प्रून कर दिया जाता है, और एक होल पोर्शन ऑफ कैन इज रिमूव इन दिस टाइप ऑफ प्रूनिंग। पूरा जो कैन को निकाल दिया जाता है, वापस उसके अंदर फिर नई ग्रोथ आती है अप्रैल को लेकर के सितंबर तक, अगस्त तक, लास्ट तक, और फिर नई के अंदर वापस जब कटिंग करेंगे उसको वापस प्रूनिंग करेंगे, और दैट प्रूनिंग इज नोन एज फ्रूट प्रूनिंग। और उसके अंदर 6 to 7 बड पोजिशन उन पे छोड़ दी जाती है कैंस के ऊपर, और वो जो 6 to 7 बर्ड में से जो बर्ड्स ग्रो करेगी उन बर्ड्स के ऊपर ही फ्रूट लगेगा। हाँ, मैं थोड़ी देर से लगाता हूँ, आपको थोड़ी देर से लगाता हूँ, 10 मिनट। देन नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। यस, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है दैट इज द बैक प्रूनिंग,
This pruning is given in the month of April, and after that vines will take root. And in September month, सितंबर में जो प्रूनिंग कर रहे हैं उस प्रूनिंग के ऊपर 2 से 4 5 6 तक इसके अंदर बड छोड़ी हुई है और इन्हीं बड्स के अंदर ग्रोथ होगी। और जस्ट इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ये प्रूनिंग करते हैं इसके बाद इस हाइड्रोजन साइनामाइड डॉर्बैक्स करके जो मार्केट में केमिकल मिलता है 50 30 to 40 ml पर लीटर पानी में मिला करके जो बर्ड्स हैं उसके ऊपर कैन पे छोड़ी हुई उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो उस डॉर्बैक्स की वजह से बर्ड स्प्राउट अच्छा आता है और हेल्प इन अर्ली एंड यूनिफॉर्म बर्ड प्रैक्टिस में हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। आप देख रहे हैं इसके अंदर जैसे वहां पर जब डॉर्बैक्स लगा उसके बाद ये जो आपका वर्टिकल शूट ये पोजीशंस हैं, बेल ट्रेंड जो वाइनयार्ड है, दिस इज द प्री ब्लूम स्टेज ऑफ बंच in this figure, and well filled bunches, and this is the wine before harvest. Next. Yes, here we give the tips of the nutrient management, no go in depth, but everyone know that grape requires the high amount of fire, good quality soil, and also a very good feeder of NPK, that is around 350, 450 and 450 ratio of NPK. This is the dose of 4 to 5 year old plants. When we talk about water management, 35 to 45,000 liters of water per hectare per day through drip irrigation is required. That's why depth is a limitation in the arid and semi-arid regions. Next, please. Yes, use of growth regulator. Bio-growth regulators plays very important role in grape cultivation. What I am saying in the early slide, जैसा मैंने पहले बताया था, डॉरबैक्स, जैसे अपन डॉरबैक्स का प्रूनिंग के बाद जब इसमें लगाते हैं तो इस तरह से बर्ड स्प्राउट इसमें होने लगता है। डॉरबैक्स 30 to 40 ml की मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी आपसे, और इससे यूनिफॉर्म कैन डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लीज। यस, जैसे ही इसके अंदर फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद अपना जो एम है वो होगा सबसे पहले क्लस्टर को इलोंगेट करना, बंच कितना लंबा बन रहा है, कितना अच्छा बन रहा है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्लस्टर ट्रीटेड विद जिब्रेलिक एसिड 10 ppm इस स्टेज के ऊपर, तो क्या होगा, रैचिस जो होती है वो इसमें बढ़ने लग जाती है। दिस इज द रैचिस प्रोसेस, ये रैचिस बढ़ेगा, है ना। 10 ppm आपको जिब्रेलिक एसिड का पॉलियर स्प्रे विद द क्लस्टर एट अ पैरेट ग्रीन स्टेज, दिस इज द पैरेट ग्रीन स्टेज। ये तोते की जो कलर का जब होगा उस टाइम का आपको 10 ppm का करना है। देन आफ्टर 4 to 5 days GA 15 ppm आपको फिर बढ़ाना है, 5 ppm और उसमें ऐड करके 15 ppm हो गया, है ना। इसके अंदर आपको रैचिस को डिप करना है, इसको डिप एक जार के अंदर वो लेकर के मग्गा में, जार में, बर्तन में 15 ppm GA और बंच के पास आप जाके इसको डुबो देंगे और पस हटा देंगे। नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, क्लस्टर जो आपका गुच्छा है वो लंबाई में बढ़ेगा। अब आपका सेकंड स्टेप आता है वेरी थिनिंग। ये देखो आप इतना सारा अंगूर लगा है इसमें, लेफ्ट साइड में देखिए, ये सारा का सारा बनेगा तो बेरी की साइज नहीं आएगी, सो वी गो फॉर थिनिंग। इसका फ्लूइड वेरी थिन करनी पड़ेगी, इसको गिराना पड़ेगा पूरा बने तो बेरी का साइज बढ़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 40 ppm GA एंड ये इसके ऊपर आपको डिप करना है उसको, इस बंच को। नेक्स्ट वन, यस, अब अपना पार्ट आ जाता है बेरी को कैसे बढ़ाना है, इलोंगेशन। अब बेरी इलोंगेशन करना है, बेरी इलोंगेशन के लिए GA का 40 ppm 3 to 4 mm जब बेरी साइज हो जाता है उस टाइम आपको वापस GA से 40 ppm से डिप करना है। बिकॉज दिस क्रॉप इज वेरी स्किल्ड क्रॉप, इसके अंदर आपको जो डिपिंग वाला पार्ट है, ग्रोथ रेगुलेटर्स का पार्ट है, उसको आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर क्वांटिटी इसमें आपको यूज करनी है। कहीं भी आपने उसको लूज किया, शॉर्ट किया तो उससे आपको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट में, यस, और इंक्रीजिंग बेरी डायमीटर। अब आपको बेरी डायमीटर कैसे बढ़ाया जाए, बेरी का साइज और आपको कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको GA3 का 40 ppm प्लस CPPU क्लोरोक्लोरोफेनोल 0.1% 1 to 2 ppm, इन दोनों को अप्लाई करके यूज 3 to 4 mm बेरी साइज जब हो, 3 से 4 mm की,
उस टाइम इसको आप यूज करें। और सेकेंड डिप आपको देनी है GA3 10 ppm कम कर देंगे, इट इज 30 ppm प्लस CPP 2 ppm। जब 6 to 8 mm बेरी स्टेज पे फिर आपको इसको करना है, तो आपका बेरी का डायमीटर अच्छा आएगा इसमें। नेक्स्ट, यस, मैं बात करूंगा अंगूर की बीमारियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट डिजीज है जिनकी वजह से पूरे ऑर्चार्ड खत्म हो जाते हैं। उनके लिए अपन पहले से ध्यान रखें और प्रोफाइलेटिक मेजर्स की इसमें यूज करें। प्रोफाइलेटिक मेजर्स में जैसे ही डिजीज आने का ज़्यादा वेट नहीं करें, बहुत ही अटेंटिव रहें फार्मर्स और जो भी कल्टिवेटर्स है। और जैसे आपको कुछ सिम्टम नजर आते हैं, सिम्टम्स के अंदर ये हैं: ग्रेप लीफ शोइंग ऑयली स्पॉट्स इन फॉर्म ऑफ डाउनी मिल्ड्यू। एंड इसके अंदर आप जो भी देंगे तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो मेटालेक्सिल मैनकोजेब nowadays azoxystrobin is also gaining importance for controlling this disease. 23 let's see at the rate of 500 ml per hectare के हिसाब से आप इसमें डालेंगे तो डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, एंथ्रेक्नोस। एंथ्रेक्नोस रेनी सीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रेप के अंदर आ जाता है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ये COC है, कार्बेंडाजिम है, प्रोपिनैब है, इनको आप यूज कर सकते हैं। और दिस इज द सिम्टम्स ऑफ एंथ्रेक्नोस इन दिस फोटोग्राफ। नेक्स्ट प्लीज, yes, pest management. Important pest is flea beetle that can be controlled by lambda cyclotron. Next one. And this is thrips. Uh, यस, जो मैं बता रहा था आपको एक बंच पहले स्लाइड्स के अंदर, वहां आप देखेंगे तो इस तरह से बंचेगा। ये कब है? ये स्टेज आपको अर्ली स्टेज के अंदर एट द टाइम ऑफ बेरी सेटिंग, इफ यू नॉट कंट्रोल थ्रिप्स then the final produce is come in like saying in this slide. So this is not the produce which is accepted by the end user. So care should be taken to control the thrips in the early stage. Uh, so beware for this loss. And for controlling these thrips, amamectin, benzoate, and fipronil and lambda cyclotron, these are the two chemicals that can be used for controlling this pest. Next one. Next, please. Jacet. Jacet also important pest of the grape, and this is also controlled through the earlier molecule, what I would suggest, like imidacloprid, lambda cyclotron. Next, please. Yes, millibug. This is also important pest. This the crop is getting more loss from this millibug, and millibug. You see that many collateral hosts is the survival of millibug thereon. So you control, and in your orchard, almost be careful to grow like this hollyhock species like that. So Malvaceae species is very much help for this in millibug. So control through glucosane and lithomanil, and beware then you see the first colony, or you go for profilating measures in grape cultivation, because this insect is coming every year in the vineyards. Next, next please. Mites. Mites also potent insect of grape, and sulfur is the best controlling molecule for mites. Next, caterpillar. This is on the this is vanish the leaves. सारी पत्तियां खा डालती हैं, और इनके इसके कंट्रोल के लिए मैक्टिन, बेंजोइड और लैम्डा साइक्लोथिन आप यूज कर सकते हैं। Next, please. Thank you. This is all about the grape cultivation in very nutshell. And I'm audible, Mehta ji?
Yes, sir, Method, you're audible. yeah, Audible, sir. yeah. I'm not going in very depth, but in nutshell, what are the things we have adopted in the grape cultivation, and what are the advances which is made in the viticulture, and house is open for the questions. Thank you, sir, for your kind and enlightening words. I believe the participants are quite clear and they understood. That's why there are no questions raised in the chat box. So your presentation on grapes and its different varieties and its propagation is very informative and interesting, sir. So I believe all the participants will enjoy and gain a lot of knowledge. So we wish and send our best wishes to you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. I'm also thankful to your team. Thank you. Thank you so much once again. Thank you, sir. Thank you, Mehta sir. Thank you. Moving forward to our second speaker, Dr. Sunita Jain. Dr. Sunita Jain is presently working as Assistant Professor, Department of Botany, Bhopal, Nobles University, Udaipur. Madam has been engaged in technical botany and biotechnology for the last 25 years. She was awarded her PhD in plant biotechnology under GATE IIT Bombay Research Fellowship. She has qualified SLED RPSC Ajmer twice, and she is a fellow member of the Indian Science Congress Association, Indian Botanical Society, and Indian Society of Chemists and Biologists. Dr. Sunita Jain has participated in development of the curricula of botany and biotechnology for BN University as a member of Board of Studies. She has published more than a dozen research papers on plant tissue culture, ethnobotany, and pharmacology in the journals of national and international repute. She has presented more than 15 research papers in national and international seminars. 3 PhDs has been awarded under her supervision, and she also acted as a resource person for 2 different workshops organized by Suprabhat Flour Mill, Hyderabad. I wholeheartedly welcome you, ma'am, and we can't wait to listen to you. And I hand over this virtual stage to you. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Please allow me to share my PPTs. Just a second, ma'am. We will be working on it. Ma'am, can you share your slide now? Yeah. Okay. Whether it is. First. Is it okay, ma'am? Yes, ma'am, it's okay. Okay, right. Good evening, all. Respected dignitaries, dear friends and students. Today I'm going to describe some potential applications of plant tissue culture and how they can play an important role in promoting entrepreneurship and agricultural business. Next slide.
Now, entrepreneurship. Entrepreneurship development is the best substitute to find employment opportunities, health, and overall food security. It can control migration of rural youth to urban areas, provide high quality diets, sustainable industrial development, productivity, profits, and many more. Thus, strategies to develop, that is, to stimulate and strengthen the entrepreneurial culture of the farming business and sustainable development are needed. India is gifted with diverse agroclimate, rich in plant biodiversity. Thus, demand for biofertilizers, seeds, biocontrol agents, industrial products, bioactive compounds, single cell proteins, hybrids, GM crops, etc., can be fulfilled by innovative development and adoption of new technologies that facilitate increased production efficiency and profitability. Plant tissue culture is a collection of techniques used to grow and maintain plant cell, tissues, or organ under sterile conditions on a nutrient medium of known composition. It is in vitro culture. In vitro means in glasswares. The main factor behind its success is the totipotency, first described by Haberland, that the inherent potentiality of a single cell to convert into a whole plant. अगर उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो उसमें क्षमता है कि वो एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो सके. Now, some of the terms used to define the phenomena in vitro studies are differentiation, de-differentiation, redifferentiation, explant, subculturing, inoculation, etc. Morphogenesis can be achieved by de novo formation of organs or by de novo formation of embryos. De novo means arising anew. The key to the successful application of tissue culture is the manipulation of media composition to achieve desired outcomes. Different media, according to their composition, are MS, B5, niche medium, white medium, and 6 medium. And the most frequently used one is Murashek and Scoop, that is MS medium. Macronutrients, micronutrients, carbon source, vitamins, amino acids, PGRs, that is plant growth regulators, solidifying agent, that is agar-agar, which is obtained from members of Rhodophyceae, class Rhodophyceae, algal, obtained from algae. It is a polysaccharide and used as a gelating agent. Now we come to the callus culture. Callus culture is an undifferentiated mass of proliferated cells produced on agar medium, whereas suspension culture is a liquid medium in which single cell or a group of cells are suspended. It is derived from pieces of callus or embryo in a homogenizer. Now we come to the applications of PTC. The most common application of PTC is micropropagation, through which we can obtain large number of plants in short time and space. These are the stages of micropropagation. First one is selection of mother plant, then initiation and establishment of culture, multiplication of shoot, or rapid somatic embryogenesis, then either rooting of shoots or in vitro germination of the somatic embryos, transfer of plantlets for hardening purpose, and then finally they are transferred to field. Many plants having inherent problems like low seed set, low seed germination, high sterility, poor pollen viability, etc., can be propagated at a large scale using this technique. In the same way, endangered or rare plants, due to habitat loss or overexploitation, can also be conserved and propagated by the same.
As there is no meiosis, no crossing over, thus the progenies obtained from a single parent are termed as clones. They are phenotypically as well as genotypically similar and thus maintain genetic uniformity of plants. Genotype, here I am using the word genotype, means genetic constitution. क्योंकि एक ही पेरेंट है और उससे ऑब्टेन होने वाले सारे प्रोजेनीज को हम क्या कहेंगे? क्लोन्स कहेंगे. ये डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्लोनिंग में. वहां पर 2 पेरेंट्स हैं, वहां पर मियोसिस है, क्रॉसिंग ओवर है, दैट्स व्हाई जीन एक्सचेंज होगा और जेनेटिकली डिफरेंट आपको प्रोजेनीज मिलेगी. लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल पेरेंट है, जो क्लोन्स हैं दे आर नॉट ओनली फिनोटिपिकली बट दे आर जीनोटिपिकली भी वो सिमिलर होंगे. और ये जो प्रॉपर्टी है वो जनरली किसके अंदर में, जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पीशीज है उनके अंदर में ये प्रॉपर्टी जो है वो बेनिफिशियल रहती है. नाउ वी कैन ऑब्टेन क्लोनल प्रोपोगेशन बाय 3 मेथड्स. उनमें से एक है एक्सिलरी ब्रांचिंग. हियर द एक्सप्लांट इज नोडल रीजन. हमने पढ़ा है कि मेरिस्टम्स जो हैं वो पोजीशन के बेसिस पर 3 जगह पर है. फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम which present at the apex, either shoot apex or root apex. Second one is intercalary, जो कि nodal region में है. और third one is lateral, जिसमें हम कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं. Now, nodal region को एज ए एक्सप्लांट लेकर के जब हम, और nodal region जो है वो राइट पोजिशन है जहां से ब्रांचिंग होनी चाहिए, उस रीजन को लेकर के जब हम क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लांट्स को, तो उसको कहा जाएगा एक्सिलरी ब्रांचिंग. ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर में पहले शूट्स डेवलप किए जाएंगे, उसके बाद में उनका सब कल्चर किया जाएगा रूटिंग मीडियम पर. इस तरह से एक कंप्लीट प्लांटलेट प्रोड्यूस होगा. हियर आई एम यूजिंग द वर्ड प्लांटलेट, दैट इज there is a slight difference in seedling and plantlet. Seed germination होकर के seedling and in vitro raised जो plants हैं उनको plantlets कहेंगे. They are the young one of plants. Clear? Now shoot formation के लिए क्या चाहिए होगा, जो cytokinin और auxin का ratio है that should be high. Cytokinins क्या हैं? They are purine derivatives. और generally जो cytokinin यहाँ पे use होता है that is BAP, benzyl aminopurine. In the same way, for rooting, low concentration of auxin, either Na, Ia, that is used, otherwise callus formation occurs. Next, we come to the adventitious branching. It means false branching. Any plant part other than the nodal region can be used as an explant. It is again a 2-step process. First step में shoots develop होंगे और second step में उनमें rooting करवा करके complete plantlet obtained होगा. Somatic embryogenesis is preferable method. Why? Because each somatic embryo is a bipolar structure consisting of shoot and root apex. Thus, in a single step, shoot and root can be simultaneously developed. Here, the word embryoid is used, means embryo-like. As they are not obtained from zygote, they are not the true embryos. Then all the 3 stages, heart shape, torpedo and globular stages are developed during their development. Now, one of the most important application of somatic embryogenesis is production of artificial seeds, defined as encapsulation of somatic embryos or shoot tips or any propagating structure by calcium alginate. Now, there is a slight difference between propagating structure and reproductive structure. Propagating structure means those structures which are to overcome the unfavorable conditions, like bulbs, bulbils, tubers. ठीक है, आप लोगों ने जब हम इफिमरियल्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ ज़ीरोफाइट्स, वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं विद इन 2-3 मंथ्स, जो कि साल का फेवरेबल पीरियड होता है, क्योंकि उस टाइम पर लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, देन ह्यूमिडिटी प्रॉपर है,
तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी राइट फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन टू सीड फॉर्मेशन। नाउ जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है साल का, जो उनके लिए एक तरह से अनफेवरेबल टाइम पीरियड है, उसमें वो डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट सीजन में जब अगेन फेवरेबल टाइम पीरियड आएगा, उस वक्त उनमें स्प्राउटिंग होती है। दे आर दी प्रोपगेटिंग स्ट्रक्चर्स। वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक ट्यूबर है, उससे सिर्फ एक ही प्लांट प्रोड्यूस हुआ है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दे आर सिंपली दी पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ propagating structures are that I have described that only to overcome the unfavorable conditions. Now they are easy to handle, easy to store, not infected by pathogens, and permit direct field transfer without any treatment. In addition to this, as there is no outer covering like zygotic seeds, thus dormancy due to seed coat can be reduced. अगर डॉर्मेंसी सीड कोट के कारण है तो वो इससे रिड्यूस हो जाएगी एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर germplasm conservation. Next one is pure culture or single cell culture. It is a population of cells originated from a single cell. Can be obtained by various methods like microdroplet technique, cell plating technique, etc. Such cultures are important to obtain single cell clones for the development of vaccines and antibiotics, for mutagen treatment, for biotransformation, and above all, for the production of single cell proteins. Okay, yeast, chlorella, spirulina, they can be used as single cell proteins, as protein supplemented food, having therapeutic values in cosmetics, in poultry and cattle feed, etc. Now, another application of PTC is meristem or shoot tip culture to obtain virus-free plants. Now, the question is, why shoot tips are virus-free? As they are rapidly dividing cells, they do not allow viruses to multiply. And the second and third reason for their virus-free nature is lack of vascularization and high oxygen concentration. Hybrids having non-viable seeds can be propagated using this technique. Okay. Next one is, these are some of the achievements of meristem culture. And most interesting one is mass production of virus-free strawberry. A novel method for triploid plant production is endosperm culture. As we know, it provides food to the developing embryo, and in angiosperms, it is triploid in nature, not in gymnosperms. In gymnosperms, it is haploid in nature, as it formed before fertilization. Okay, angiosperms में double fertilization and triple fusion. Endosperm is triploid in nature. It is self-sterile and usually seedless, and is desirable in case of watermelon, mango, etc. In the same way, in timber yielding plants, triploids show better performance over their relative diploids or tetraploids. Some more techniques like in vitro fertilization, embryo rescue, embryo culture are also in use where the embryo is incompletely developed. Again, it is used to overcome seed dormancy due to immature embryo, like in orchids. Haploid plant production is an important technique to develop pure homozygous lines in a single generation. For induction of mutation, genetic variability, and for generation of exclusively male plants, haploid plant production is required. By diploidization,
Using colchicine, homozygous diploids can be obtained. Right. Now, colchicine is an alkaloid that is obtained from Colchicum autumnale, and it inhibits the formation of spindle fibers. एनाफेज के टाइम पे जो ऑपोजिट पोल्स की तरफ में मूवमेंट होता है वो नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर्स नहीं का फॉर्मेशन नहीं हुआ. क्लियर. देन मेन जो यूज है हैप्लॉइड्स का वो दो चीजों में ही है. फर्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन अ सिंगल जनरेशन, एंड सेकेंड वन इज टू ऑब्टेन होमोजाइगोसिटी. क्योंकि जब तक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तब तक रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. जब तक वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में नहीं आएगा, क्लियर, तो आपने हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस करे. कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देकर के डिप्लोइडाइजेशन करवाया. नाउ अब हमें क्या ऑब्टेन होंगे? होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल टी. ओके, अगर टी कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो उस केस में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. हर जीन के दो एलील्स जो कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर सिचुएटेड हैं और जहां पे लोकेटेड होते हैं उसको लोकस कहते हैं. नेक्स्ट, transfer and incorporation of foreign DNA into a host genome. Genome, genetic constitution, is called genetic transformation, and it can be performed by three methods. First one is somatic hybridization, which we have already discussed. Second is agrobacterium mediated, and third one is by genome editing. जीनोम एडिटिंग के अंदर में मेन तीन टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज जीन ओवर एक्सप्रेशन. एज वी नो दैट जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, क्रोमोसोम पर रेखीय क्रम में प्रेजेंट है. क्लियर. नाउ सपोज इट्स सीक्वेंस इज ABCD. ए जीन का डुप्लीकेशन अगर होता है यानी ABCD, देन इट इज टर्म्ड एज जीन ओवर एक्सप्रेशन. Gene silencing, that is suppressing their expression, and by gene knockout, that is removing the gene. Generally इस तरह का ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब कोई डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव करना. ओके. नेक्स्ट वन, सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट. इंटरस्पीशीज क्रॉसिंग इज naturally not possible. Isolation of protoplast of two different species having desirable characters and their fusion results in production of hybrids. Generally, जो crop species हैं, crop varieties हैं, उनके अंदर में yield ज़्यादा है. उन्हीं के जो wild varieties हैं, उनमें resistant qualities हैं, biotic और abiotic stresses को टॉलरेट करने की. नाउ हम क्या चाह रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर्स आपस में मिलकर के एक इस तरह का हाइब्रिड बने जिसमें यील्ड भी ज्यादा हो और वो रेजिस्टेंट वैरायटीज भी हो. और ये किससे पॉसिबल है? बाय सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से, एंड देयर फ्यूजन रिजल्ट्स इन. तो कर क्या रहे हैं इसमें? आइसोलेट कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट को दो डिफरेंट स्पीशीज के जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, उनको फ्यूज कर रहे हैं और फिर उनका कल्चर कर रहे हैं. और ये पूरा डायग्रामेटिकली यहां पर प्रेजेंट किया. द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. जो क्रॉसिंग है वो पॉसिबल है एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल्स में. क्लियर. जेनेटिकली डिसिमिलर जो प्लांट्स हैं उनमें क्रॉसिंग, और क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? सुपीरियर वैरायटी हैविंग यूजफुल एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स सच एज पोमाटो, सीडलेस डिप्लॉइड्स, डिजीज रेजिस्टेंट हाई यील्डिंग वैरायटीज, एक्सेट्रा. Next we come to soma clonal variation. It is the genetic variation present in plants
generated by PTC, plant tissue culture. Okay. Gene mutation, change in chromosome number, aneuploidy, euploidy, change in chromosome structure, that is by deletion, duplication, inversion, translocation, and used for using a structure